God bless you all. Welcome to my friendly math channel. Do you need solution to this question? Let's see how to solve it. Okay. 7 upon blank is there and 5 upon blank is there plus, right? So let's assume here to be x and here y. Similarly, blank upon 5 plus blank upon y, 9. So let's assume x and y here. So these equations will become, now this y will be multiplied with this 7 and x will be multiplied with this 5 because xy LCM. So basically we are multiplying both the terms with xy. X will be cancelled and here y will be cancelled. So that is the logic behind it. So it will become 7y plus 5x is equal to 74, right? And ये हो जाएगा 9x, this cross multiplication. So 9x plus 5y is equal to 118. इसे हम rearrange कर लेते because 5x is here. Let's bring this x term first. It will be 5x plus 7y is equal to 74. Okay, let's assume this as the equation 1 and this as the equation 2. अब हम इसे एलिमिनेट करेंगे एक्स टर्म को, तो इक्वेशन 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 9 5 ज़ा 45x प्लस 9 7 ज़ा 63 एंड सो ऑन इन दिस वे. तो ये 45x हो जाएगा अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड देन इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 5 इट विल ऑल्सो बिकम 45, राइट. तो 45 हमें एक्स टर्म को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. देखिए कैसे. multiplying equation 1 by 9 and equation 2 by 5. देखिए हम x टर्म को एलिमिनेट करने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 9 एंड इक्वेशन 2 विथ 5, राइट. अगर y टर्म को एलिमिनेट करना है हमें, तो हम इसे y के आगे इधर कोएफिशिएंट 5 है, इधर 7 है, तो इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि y एलिमिनेट हो जाएगा तब. इज दैट क्लियर? एनीथिंग यू कैन डू, अप टू यू. सो इक्वेशन 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल बिकम 9 5 ज़ा 45x प्लस 9 7 ज़ा 63y इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी ओवर, 9 7 ज़ा 63 plus 666, right? Sorry. And then similarly, equation 2, we are multiplying with 5. So 9 5 ज़ा 45x. Let's consider this as equation 3. And now this will become 45x plus 25y. I hope you are getting. I am multiplying equation 2 with 5. Okay, because 5 is the x coefficient of equation 1. That's why. 5 8s are 40. 4 carry over. 5 1s are 5 plus 4 9. And 5 1s are 5. Now subtracting equation 4 from 3. Here subtracting equation 4 from 3, right? So what will happen if we subtract? All the signs will change because so many times in my videos I kept on explaining you, because when we are multiplying with minus, minus into plus will become minus, minus into plus will become minus, minus into plus will become minus. That's why. Okay, now I change the color of the ink. तो अब हम इस minus को consider करते हुए इसे solve करेंगे. Plus 45x and minus 45x will be cancelled, right? Now 63 minus 25, 13 minus 5, that is equal to 8, and 5 minus 2 3, 38y, right? 38y is equal to 6 minus 6 and 16 minus 9, 7, 76. Therefore, y is equal to 76 upon 38. 38 2s are
Okay, therefore we got y is equal to 2. Okay, now substituting y in equation 1 also, if I do here, otherwise, okay, substituting equation y, putting y is equal to 2 in equation 1. Equation 1 is 5x plus 7y is there. So 7 into 2 is equal to 74. Right? Therefore, 5x is equal to 7 2s are 14. And this 14 जब हम is equal to के उधर ले जाएंगे, that will become minus 14. 74 minus 14, that is equal to 60. Therefore, x is equal to 60 by 5. X is equal to 12. Okay. Here you can write down 12 कैसे आया? This 60 divided by 5, that is equal to 12. Therefore, in blanks, it is, therefore the equations will be 7 upon 12 plus 5 by 2 is equal to 74. And the next one is 12, x की जगह 12 लगा रहे हैं, that's it, upon 5 plus 2 by 9 is equal to 118. Okay, इसे आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो. दिस इज़ द आंसर. अगर ये वीडियो पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द